Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 17th lecture of this series of Indian Evidence Act. We are continuing with the section 313 of the CRPC. अब सबसे पहले आप 313 के issues समझिए. What are the issues? The first issue is the general purpose of the section 313. Then the second issue is if the examination of 313 1A and 1B is not conducted, then what is the effect? And what is the effect? The effect is that it is a irregularity, but that is a curable irregularity. Then the other issue is why do not we administer it on oath? Then the next issue is in the summons cases we dispense with the personal appearance. We can dispense with the personal appearance and can also dispense the personal examination also. Then next issue is 2009 amendment. And lastly, the evidentiary value. So these are the broad issues in this section. First is the purpose of the section in dispensation from the examination. Then if the examination not conducted, then what is the effect? This is the dispensation in the summon case. Then administration of why not administer on the oath. Then 2009 amendment. Then evidentiary value. 2009 amendment and the purpose. Then evidentiary value. The evidentiary value of the statements in the same proceeding and in other proceeding. So write down section 313 CRPC is an aspect of inquisitorial proceedings. 313 CRPC is an aspect of inquisitorial proceedings. That is, the judge also participate in the proceedings to satisfy itself regarding the truthfulness of the evidences produced. Section 313 is a pure personal examination. 313 is a pure personal examination of the accused by the court itself, and it is an aspect of the principles of natural justice. The purpose of examination, as declared in section 313 itself, is to enable the accused to personally explain the evidences that have been proved against him. It is one-to-one examination by the court of the accused. Means it is the examination between court and accused. Intervention between court and accused. One-to-one examination by the court of the accused, and the lawyer shall not intervene at the time of the examination. Now write down next paragraph. Section 313, clause 1A uses the word may, and thus enables the court to examine the accused at any stage. It is implicit that such examination shall take place only after at least one or some evidences are being produced by the prosecution. I told you yesterday this point in previous lecture that the purpose of the examination is what? To seek an explanation regarding the evidences, और जब तक evidences नहीं आएंगे तब तक examination तो होगा नहीं. Then next sentence, 313 clause 1b uses the word shall and therefore makes it mandatory for court to examine the accused after the prosecution evidence is over and before defense evidence starts. This is mandatory in all cases. It has been held in Latu Mehto and others versus State of Bihar bracket में now Jharkhand 2008 Supreme Court that if the compulsory examination under section 313 clause 1b has not been conducted, it is a curable irregularity under section 465 of CRPC. Under 465 of the CRPC, section 465. That is, it will be examined as to whether due to non-examination there has been
any failure of justice against the accused or not. If yes, then the proceedings will vitiate. Vitiate मतलब क्या? Proceedings क्वैश हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और फिर से आपको ट्रायल करना पड़ेगा. If yes, then the proceedings will vitiate. Means the proceedings will be quashed and again the admission of the trial to be done. However, if there has not been any failure of justice, if there has not been any failure of justice, then irregularity shall be said to have been cured. However, if there has not been any injustice, then irregularity shall be said to have been cured. फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये जब CRPC आप पढ़ोगे, then you will know 465 talks about the irregularities. और curable irregularity means अगर failure of justice हुआ है, then the proceedings will vitiate. But if there is no failure of justice, then the defect will be cured and the proceedings will not vitiate. That is in the 465 of the CRPC. Then right, it was also held that the court shall not conduct any of the proceedings of section 313 as mere formality. Rather, the court shall put effective questions before the accused so as to actually enable him to explain the evidences proved against him. Means आप accused को एक visible मौका दे रहे हो. Some evidence is proved against the accused and you are giving a reasonable opportunity to the accused by asking the questions directly. And what does he has to say regarding that upon questions? अब उसका lawyer will always frame and say the answers accordingly, but it is the accused who give spontaneously answers to the questions, and that much opportunity you are giving to him. So there the questions should be asked in the real manner, effective questions. Means you should not be asked questions which is of a routine and of a mere formality. तो एक फॉर्मेलिटी के काइंड पे नहीं होना चाहिए. इफेक्टिव क्वेश्चन जब उससे पूछेंगे तभी वो उस पर इफेक्टिव आंसर्स दे सकता है एंड अपने लिए ही कैन क्रिएट ए सम काइंड ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट पैराग्राफ. As per section 313 clause 1 proviso, if the court has dispensed with personal appearance of the accused in someone's case, then the court also has the discretion to dispense him with personal examination under section 313. Such dispensation in someone's case can be done under section 205 or even in 317 CRPC. The discretion lies with the court to dispense or not to dispense with the examination in such cases. Means what? मान लो 205 या 317 में 205 of CRPC और 317 accused के personal appearance को dispense कर रखा है. अब उसके बाद accused did not appear into the court. अब मान लो court finds after that there are certain questions, but there are some pertinent questions regarding the evidences which the accused personally can answer and which is important for the court to make up its mind regarding the decision. Then the court may still summon the accused for the purpose of that examination. But if the court finds that there is no pertinent question to be asked to the accused, there is no pertinent question asked to the accused, if court finds that, and court thinks that it is a mere unnecessary procedure, then the court can dispense with the examination in such cases. So in that cases the court may dispense with the personal examination of the accused. अब वो डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है और वो डिपेंड करता है कि कोर्ट के पास कोई ऐसा सवाल है कि जो एक्यूज से ही पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए उसको सम्मन करके एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है एक्यूज को. तो एग्जामिनेशन के लिए उसको 1 या 2 दिन में सम्मन करके बुला सकते हुए जो भी डेट फिक्स करेगी कोर्ट. बट दिस इज वेयर ओनली इन द
summons cases. This warrant cases में भी personal appearance को dispense किया जा सकता है, but it is not in 205, it is in 317 of CRPC. Now if it is a warrant case and it is the 317 where the court can dispense the personal appearance, then the proviso will not apply there, because proviso applies only to the summons cases, and therefore in such cases it will be mandatory for the court to summon the accused for the purpose of interrogation. तो वहाँ पर फिर आप एग्जामिनेशन को डिस्पेंस नहीं कर सकते, आप पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर सकते हो। तो पर्सनल अपीयरेंस जब 313 का एग्जामिनेशन ना हो उसके अलावा वो ना आए, बट 313 के का जब एग्जामिनेशन होगा, स्टेटमेंट्स होंगे, उस दिन उसको आना पड़ेगा फॉर द फिक्स्ड डेट। सो राइट डाउन, हाउएवर इन वारंट केसेस the court can dispense with the personal appearance under section 317 of CRPC, but it cannot dispense with the personal examination under section 313. It will rather have to summon the accused even in such cases for the purpose of examination under section 313. So ऐसे cases में जिनमें personal appearance warrant cases में dispense कर रखा है, फिर भी आपको एक्यूज्ड को सम्मन कर एग्जामिनेशन तो करवाना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। अगर सम्मन्स केस होता तो वहाँ पे अपीयरेंस भी डिस्पेंस कर सकते हो और एग्जामिनेशन भी डिस्पेंस कर सकते हो, लेकिन वारंट केस में ऐसा नहीं होगा। 313(1)A में एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं है, ए में तो एग्जामिन एट एनी स्टेज, लेकिन 313(1)B का जो एग्जामिनेशन है दैट इज कंपलसरी। तो वो जो स्टेट है आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज एंड बिफोर द डिफेंस एविडेंस स्टार्ट, उस बीच का जो स्टेज है, देयर इट इज कंपलसरी टू एग्जामिन। इन सम्मन केसेस यू आर हैविंग डिस्क्रिशन टू डिस्पेंस विद, बट यू आर नॉट हैविंग द डिस्क्रिशन इन द वारंट केस इवन इफ यू हैव डिस्पेंस विद द पर्सनल अपीयरेंस। तो एग्जामिनेशन डिस्पेंस नहीं कर सकते वारंट केस में, दैट इज कंपलसरी। नाउ नेक्स्ट इशू इज ओथ, राइट अपॉन दिस, write down, oath is not administered in such examination. The purpose is, first point, to give full freedom to the accused to make whatever reply he wants to, which may be curtailed upon the administration of oath. What may be curtailed? That freedom. Which freedom may be curtailed upon the administration of oath? Oath will create a fear in the mind of the accused that he may get prosecuted. Prosecuted for what? Prosecuted for forgery, false evidence under section 193 of IPC. Oath will create a fear in the mind of the accused that he may get prosecuted for false evidence under section 193 of IPC if he does not reply correctly. Then the examination of the accused should be spontaneous, and the essence of section 313 lies in the fact, the semicolon, lies in the fact the administration of oath would defeat that very purpose of section 313. The examination of the accused should be spontaneous, and the essence of 313 lies in that fact, semicolon, the administration of oath would defeat that very purpose of section 313. तो ये पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट लिख लो आप। नाउ राइट द सेकंड पॉइंट, इफ oath is administered then the opposite party will get a right to cross examination, which would not be proper, as the very purpose of section 313 is to have pure personal examination of the accused by court. If the oath is administered, then the opposite party will get a right to cross examination, which would not be proper, as the very purpose of section 313 is to have pure personal examination of accused by court. अब इसके बाद एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, इन 313 क्लॉज 3
there is no liability upon the accused if he gives the false statement or deny to give a reply. तो आपने अगर सही जवाब नहीं दिया या जवाब देने से मना कर दिया तो एक्यूज्ड की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि अब ओथ एडमिनिस्टर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पॉलिसी है कि अगर वो गलत जवाब भी दे दे या जवाब देने से मना भी कर दे तब भी हम उसको लायबल नहीं करेंगे। अगर वो गलत जवाब दे दे या जवाब देने से मना कर दे तब भी he cannot held liable. And when you administer oath to him, then obviously under section 193 he will be held liable for the wrong answer, and that will result into a conflict between the section in the section itself, because on the one hand you are saying that he will not be held criminal liable, and on the other hand if you say that administration of oath is necessary, and the moment you administer oath he will be held criminally liable if he make false answers, and therefore this clause 2 and 3 comes into conflict. So write down, as per clause 3, the accused will not be held criminally liable if he refuses to give answers to questions or if he makes false answers. तो अगर कोई व्यक्ति बाउंड टू आंसर है और वो रिफ्यूज करता है टू आंसर तो उसके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी होगी 179 आईपीसी में। तो एक व्यक्ति इफ ही एडमिनिस्टर ओथ एंड इज बाउंड टू गिव आंसर एंड इफ ही रिफ्यूज टू मेक आंसर गिव आंसर then he will be criminally liable under 179 of the IPC, and if he gives the false answer then he will be liable under 193 IPC. So refusing to answer is 179 and giving wrong answers is 193 of IPC, in which the criminal liability occurs. Right. If oath was administered, then a kind of compulsion will lie upon the accused to give the answer and to give the correct answers. Here that would have resulted into a internal conflict under section 313 itself and would have defeated the very purpose of clause 3 of section 313 CRPC. क्योंकि clause 3 क्या कहता है 313 का, आपकी कोई criminal liability नहीं होगी. The accused is free to answer or give the wrong answer or not to answer whatever, but the accused will not be criminally liable. Court inference निकालेगा regarding the thing, that is a different thing, but you are not liable on giving the wrong answers. Now if you administer oath, then he would not be free and he is bound, and he knows that if I will not answer then I will liable under 173, and if I make wrong answer then I would be liable in 193. Sorry, in 179 and 193. If not answer in 179 and if give false answer in 193 of IPC. And by this the very purpose of clause 3 has got defeated, and therefore also the oath may not be administered. अब इसके बाद 313 clause 5 पर लिखें, that is 2009 amendment added in 2009. So write down, even before 2009 amendment, the Supreme Court in Kia Mukherjee versus Magma Leasing Limited and another 2008 Supreme Court had, relying upon its earlier judgment in Vibhuti Bhushan दास गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1969 सुप्रीम कोर्ट। तो जो जजमेंट हम लिख रहे हैं वो किया मुखर्जी वाला लिखेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में किया मुखर्जी वाले में रिलाई किया था इस जजमेंट को, विभूति भूषण दास गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1969 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, अपने जजमेंट को, एंड हेल्ड। तो उसमें कई पॉइंट्स बताए गए थे, इसमें से एक पॉइंट ये है दैट 313 इज ए प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन। Then number 2, the dispensation of the accused from personal examination. ये लिखवा ही चुका हूँ मैं आपको। In the summons case, the court has the discretion. So these 2 points you already know. इसको पहले ही डिक्टेट करा चुका हूँ मैं कि 313 का बयान इट इज ए प्योर पर्सनल एग्जामिनेशन होगा, और इन सम्मन केस में डिस्पेंसेशन ऑफ द accused from personal examination can be done on the discretion of the court.
तो इन दो पॉइंट को आप दोबारा उसी तरीके से लिख सकते हो, पहले लिखवा चुका हूँ। नाउ राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। फर्स्ट टू तो ये हो गए, थर्ड इज दिस: द केसेस वेयर द personal attendance of the accused has been dispensed with, the court may still conduct the examination of the accused by serving written questions to him upon the application and affidavit that he will not be prejudiced. Prejudice मतलब आप समझते हो, कुछ नुकसान ना हो, उसका कुछ नुकसान हो ना, जिससे उसका कुछ नुकसान ना हो. That he will not be prejudiced thereby. The court, while framing such questions, may even take the help of the prosecution and the defense. The accused may file a written statement to such questions. So the point is कि इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोर्ट ने अक्यूज्ड का पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर रखा है, तो अगर कोर्ट चाहे तो अक्यूज्ड का पर्सनल एग्जामिनेशन भी डिस्पेंस कर दे. लेकिन अगर कोर्ट डिस्पेंस नहीं करना चाहता तो जरूरी नहीं है कोर्ट को एक्यूज्ड को आप सम्मन करके कोर्ट में बुलाओ. आप रिटन क्वेश्चन दे सकते हो उसको, एंड ही कैन फाइल ए रिटन रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस इनटू द कोर्ट. सो फर्स्ट टाइम इट वाज टॉक्ड अबाउट अवॉइडिंग द time of wastage of time of the court, because in examination of the accused in personally, that there is wastage of time of the court also. So the court can also go for the written questions, and since these questions are interrogatory, so the court can take these questions from prosecution and defense also. Now by the amendment they have done is what they have done. By the amendment they generally declare it. It is not only when their attendance is dispensed with, when the attendance of the accused is dispensed. By the amendment, they are not talking about only that condition where the accused attendance is dispensed with. By the amendment, they are generally declaring that if the court deems fit, it can always come with written question to the accused, and the accused can file the reply to those questions. Now the question arose that is it not, by this is it not we are losing the very purpose of section 313. So for that we have to draw a harmony between the overburdening of the courts, the wastage of the time of the courts is one issue, and the personal examination of the accused orally is another issue. And the court can always draw a harmony by requiring him to appear in person in those cases where the court finds that the examination of the accused is very pertinent in the case. Examination personally of the accused is very pertinent in the case. And in those cases where it is of in a written matter, those cases where the court finds that it is a routine matter, the court can always go for serving the questions in the written form. यहाँ पर routine matter लगता है कोर्ट को. So write down. The 2009 amendment now provides for the power of the court to give written questions and obtain written answers in all cases, irrespective of whether the personal attendance of the accused has been dispensed with or not. This gives rise to the issue as to whether does not this amounts to a defeat of the very purpose of section 313. A balanced harmony has to drawn between the requirements of the overburdening of the court and the requirement of the spontaneous personal examination of the accused. In ordinary cases, the court can always serve the written questions to the accused, but in those cases where believes that the examination of section 313 is pertinent, means important
for a proper decision of the case, then it always has the discretion to examine the accused in person. मतलब कोर्ट के पास ये पावर हमेशा रहती है कि कोर्ट को अगर लगता है कि उसका एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, पर्सनल एग्जामिनेशन उसका इम्पोर्टेंट है, जरूरी है और स्पॉन्टेनियस आंसर, तो उसको आप पर्सनल एग्जामिनेशन करो। अदरवाइज रूटीन मैटर्स में आप उसको रिटन मैनर में एग्जामिन करो। लेकिन 313 में इट इज कंपलसरी एग्जामिनेशन। एग्जामिन तो 313 1B में जो कंपलसरी एग्जामिनेशन है तो उसमें तो एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा, बट अगर कोई रूटीन मैटर है तो उधर एग्जामिनेशन, पर्सनल एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। देन द कोर्ट कैन सर्व द क्वेश्चंस, बट इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्सनल एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट, then the court will go for examination in person. Now the next is evidentiary value. What is the evidentiary value of section 313? What is the value of the evidentiary, or what is the evidentiary value of the examination of 313? So evidentiary value is, for the present case you can only take into consideration, and in other trial means what? Trial in some other case, then it is the proper piece of evidence. These statements of 313 is proper piece of evidence in some other case. It can be used under admission. तो इस प्रेजेंट केस में आपके इंक्वायरी या ट्रायल के प्रोसेस में आपका एग्जामिनेशन हुआ, तो यहाँ पे प्रेजेंट केस में ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर सिर्फ इस स्टेटमेंट्स को कंसीडरेशन में ले सकते हैं टू मेक द इन्फ्रेंस। लेकिन किसी और ऑफेंस में अगर ट्रायल चलता है बाद में, तो जिसका ट्रायल अलग से चल रहा है, उसके लिए जो आज आपने कहा था 313 के अंदर, ये स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट आपका एविडेंस माना जाएगा, एंड दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो ये एडमिशन की तरह एक एविडेंस यूज होगा, एंड दैट विल you will understand when you read section 21 etc. later on. So in the other cases it will be used as substantive piece of evidence and it would be considered as admission, but in the present case it will only taken into consideration. Now what do you mean by only taken into consideration? When you say that it can only be taken into consideration, what is that means? अब देखो, किसी भी केस में there are set of relevant facts. किसी भी केस में रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि ड्यूली प्रूव्ड होते हैं। अब कुछ तो उसमें ड्यूली प्रूव्ड होंगे और कुछ ड्यूली प्रूव्ड नहीं होंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज रिलेवेंट फैक्ट्स विच आर ड्यूली प्रूव्ड। तो जो ड्यूली प्रूव्ड रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, इनको जब कोर्ट एक दूसरे से जोड़ेगा तो हो सकता है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको, जो ड्यूली प्रूव्ड है, उनको एक दूसरे से जोड़ेगा कोर्ट, then the court may be found that the chain of circumstantial evidence is complete. Now these bricks are the substantial piece of evidences. Now this examination of the accused is not forming a brick in this chain. It means it cannot be used as a substantive piece of evidence in this case. मीन्स इसको आप सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह यूज नहीं करोगे। अब कई बार क्या होगा, प्रोसिक्यूशन ने ये सारे जो ब्लॉक्स हैं, ये एविडेंसेस प्रूव किए, रेलिवेंट फैक्ट्स प्रूव, ड्यूली प्रूव्ड, ये प्रूव किए और सेट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एक चेन कंप्लीट हो गई। लेकिन कोर्ट हैज ए स्लाइट काइंड ऑफ हिच। कोर्ट को विश्वास तो हो गया है लेकिन थोड़ी सी कहीं पे कमी है, सम सीमेंटिंग इज रिक्वायर्ड। Suppose this is the wall and these are the bricks of the wall. They are very tightly with each other. But maybe you will find somewhere that there is a small gap. Otherwise the bricks are very tightly put with each other. लेकिन कहीं पर थोड़ा सा कोई गैप दिख रहा है आपको, लेकिन वो जो गैप है उसमें कोई अब ब्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, उसमें अगर थोड़ा सा मसाला सीमेंट वगैरह डाल दो तो वो फिल हो जाएगा। तो वहाँ पर सीमेंटिंग मटेरियल की ज़रूरत है, प्रॉपर ब्रिक की ज़रूरत नहीं है। मीन्स मटेरियल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है जो कि ड्यूली प्रूव्ड हो, बस एक स्लाइटली कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ हिंट की ज़रूरत है। बिकॉज ऑल द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर ड्यूली प्रूव्ड एंड कंप्लीटेड द चेन,
but there is small hitch, means a small gap, which requires some cementing. If such gap is not cemented, then the court will not convict the accused and give the benefit of doubts to the accused. And if that gap is cemented, then the court is totally convinced that the conviction of the accused is proper. So for that purpose, to find some kind of indication as somewhat the court deciding that it is correct or not, some to get the some kind of extra assurance for itself कि जो मैं डिसाइड करने वाला हूँ वो सही है या नहीं, उसके लिए द कोर्ट विल पुट द क्वेश्चंस टू द accused in 313. And if the court finds that the accused is having some genuine explanations, then it means what? It means that this gap is not filled. And if this gap is not filled, then the court will give the benefit of doubts to the accused. But if the court finds that the accused has given some absurd answers to the questions asked to him, and by giving the answers, he trying to fool the court and he is not having a complete explanations, then you can say that the gap is filled and the court will go for convicting the accused. अब ये सेम एग्जाम्पल ही आपका कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज में भी देखेंगे हम. तो ये कुछ इस तरीके के केसेस हैं. 313 हो गया, कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज हो गया, एक्सेट्रा, जो अपने आप में एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह रोल प्ले नहीं करेंगे. दे आर नॉट कंप्लीटिंग द चेन ऑफ द circumstantial evidences, but if there is some doubt regarding the chain of circumstantial evidences, then as an indicative evidence, the court can use this examination of 313 to fill that gap, to fill that missing link. There is some small missing link somewhere due to which the court is not able to come on to decision. If the court gives the explanation, if the accused gives the explanation to the court, then the missing link is not covered and the court gave the benefit of doubts to the accused. But if he gave the absurd explanations, then the court can frame the mind that he has committed the offense and the court can convict him. तो ये इसका यूज है. अपने आप में एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा उस केस में. अब राइट डाउन सम केसेस. त्रिमुख मारुति MARUTI कीर्तन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 सुप्रीम कोर्ट. देन अनदर केस गुलाबचंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1995 सुप्रीम कोर्ट. देन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस राजेंद्रन 1999 सुप्रीम कोर्ट. It was held that with respect of some inquiry or trial, the examination of 313 cannot form a substantive piece of evidence. Rather, the only role it can play is to provide an indicative evidence to complete the chain of circumstantial evidences. For example, if the court finds that the chain of circumstantial evidence is almost complete, but still there is some gap or some missing link, the court can take into consideration the answers given by the accused, and if the answers are logically trustworthy and they provide a reasonable explanation to some of the evidences, then the court may give the benefit of doubt to the accused. However, if it finds that the accused does not have any rational answer or explanation, then the missing link will said to have been filled. That is, the court may draw an extra assurance for itself and may convict the accused. However, it has been clarified that Section 313 cannot create a substantive piece of evidence in the same trial. मतलब 313 के बयान को आप सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह यूज नहीं करोगे उसके सेम ट्रायल में केस में. हाँ, अगर लिंक कोई मिसिंग है, एक कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस बन गई है, लिंक कहीं मिसिंग है, तो उसको
313 के बयान को आप मिसिंग लिंक की तरह, लिंक मिसिंग भी नहीं बोल सकते, एक स्लाइट गैप है, तो उसको गैप फिल करने के लिए आप यूज कर सकते हो। लिंक ही मिसिंग है तो देन इट इज नॉट ए कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंसेस, तो उस स्लाइट गैप को हम मिसिंग लिंक बोल रहे हैं, अदरवाइज it is a gap only. But if the court is having doubt that the chain itself is not complete, some substantive evidence is missing, and when you are examining the accused, you find that he is not giving the proper answer, and by using that you convict the accused, then that is not possible. अब अगर चेन कंप्लीट हो गया, उसमें थोड़ा सा डाउट है, कुछ गैप है या मिसिंग लिंक है, तब आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन चेन अपने आप में ही कंप्लीट ना हो तो आप 313 के बयान पर उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे जैसे एविडेंस में हम आगे बढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय चेन, मिसिंग लिंक एक्सेट्रा। These are the very important areas 311, 313, 165, because when you go before the interview board, then they will often ask you questions from Evidence Act, and these are the areas from which they ask questions. Now write down another point. Write down a case: Mohan Singh versus Prem Singh and another, 2002 Supreme Court. इसमें एक पॉइंट था अबाउट द इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी? तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो एक्यूज्ड के फेवर में जाए, मीन्स जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके फेवर में जाए, दैट इज एक्सकल्पेटरी। समथिंग विच गोज इन योर फेवर, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेटरी, एंड समथिंग विच गोज अगेंस्ट यू विल बी कॉल्ड इनकल्पेटरी। जब मैं कोई बयान देता हूँ तो जो कुछ बयान होता है जो मेरे फेवर में जाएगा और कुछ बयान होता है जो मेरे फेवर में नहीं जाएगा। जो फेवर वाला बयान होता है दैट इज एक्सकल्पेटरी, और जो खिलाफ वाला बयान है दैट इज कॉल्ड इनकल्पेटरी। तो जब आप एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करोगे 313 में, तो ही मे मेक सम स्टेटमेंट्स विच गो अगेंस्ट हिम, बट he also makes some he may also make some statements which go in his favor. So in that case, what will the court do? Then can the court bifurcate in any of these kinds of sentences? जैसे कोर्ट उसके फेवर वाले सेंटेंसेस को निकाल दे और उसके जो अगेंस्ट वाले सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स हैं उसको यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्यूज्ड से कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे एक कन्फेशन है, तुम्हारा एक कन्फेशन है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने तुमने किया था, वो तुम्हारे खिलाफ प्रूव्ड हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू से रिगार्डिंग द कन्फेशन? मान लो एक्यूज्ड कहता है यस आई हैव कमिटेड द क्राइम, बट एट द सेम टाइम ही सेज दैट द कन्फेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मी बाय कंपल्सन। मुझे मार पीट कर, बंदूक दिखाकर कंपल्सन में स्टेटमेंट लिया था, मेरा कन्फेशन लिया था। हाँ, ये और बात है कि मैंने क्राइम किया है, बट अगर आप कन्फेशन के बारे में पूछो तो वो वॉलेंटायरली नहीं है। तो अब इधर एक्यूज दो तरह के सेंटेंसेस कह रहा है। एक तो कह रहा है मैंने क्राइम किया, दैट इज इनकल्पेटरी, लेकिन कन्फेशन के लिए ही इज सेइंग इट इज नॉट वॉलेंटायरली, इट वाज अंडर कंपल्सन, देन दैट इज एक्सकल्पेटरी। देन कैन द कोर्ट यूज द इनकल्पेटरी पार्ट एंड एक्सक्लूड द एक्सकल्पेटरी पार्ट? क्या कोर्ट कह सकता है कि हाँ ठीक है, कन्फेशन तो कर लिया ना कि मैंने मारा था, तो कन्फेशन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम कन्फेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही सेड दैट आई वाज कंपेल्ड टू गिव द कन्फेशन। अब ऐसे केसेस में व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट? कोर्ट क्या करेगी? ऐसे केसेस में द कोर्ट विल एग्जामिन द circumstantial evidences and see in the light of the circumstantial evidences, in the light of the other circumstantial evidences, whether the inculpatory part stands correct or not. If the court finds that the inculpatory part is false on the face of it, means it does not fit into the circumstantial evidences, whereas the inculpatory part fits into the circumstantial evidences and appears to be true, then the court will remove away the exculpatory part
believing that to be false, and use the inculpatory part to convict the accused. अब ये टॉपिक आपको और भी पढ़ना है। जब आप कन्फेशन पढ़ोगे वहाँ पे आपने ईसीआर केस भी है और ऋषिकांत झा का केस भी है, उन दोनों में ये टॉपिक आप पढ़ोगे। लेकिन अगर कॉमन सेंस की तरह पे आप समझोगे तो दो तरह के स्टेटमेंट होंगे, एक आपको बचाने वाला स्टेटमेंट और एक आपको फंसाने वाला आपके खिलाफ का स्टेटमेंट। अब कौन सा पार्ट सही है वो कोर्ट को कैसे पता चलेगा? तो वो कोर्ट पता करेगी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में कौन सा पार्ट सही दिखता है। जो सही दिखता है उसको यूज करो और जो गलत दिखता है उसको एक्सक्लूड करो। सो राइट डाउन, इफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 CRPC contain both exculpatory and inculpatory part, then the court has to examine in the light of the circumstantial evidences as to which of them appears to be correct. The part which appears to be correct shall be used by the court, be it inculpatory or exculpatory. But the part which seems to be wrong has to be excluded by the court. मीन्स दो पार्ट है उसके स्टेटमेंट में, और उसमें से कोई पार्ट आपको लग रहा है कि जो गलत है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में फिट नहीं बैठ रहा, झूठ बोल रहा है उस पार्ट के बारे में, तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, और जो फिट बैठ रहा है उसको यूज़ कर लीजिए। अब उसको यूज़ करने के बाद अगर वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है पूरा, तो उसको कन्विक्ट कर दीजिए उस पर, और या फिर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है उससे, तो उसको एक्विट कर दीजिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन एज टू विच ऑफ द पार्ट इज सीम्स फिट। और ये भी देखना पड़ेगा जो फॉल्स पार्ट है वो, और जो मीन्स जो फेवर वाला पार्ट है और वो, और डिसफेवर वाला पार्ट है वो, उनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। अब डिटेल में एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी आपको जब कन्फेशन में देखेंगे, हम कन्फेशन पढ़ेंगे तो उधर समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक एंड दिस क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।